Good evening and welcome to another episode of News Truth. This is Rennie Abraham, and today we will be discussing the forthcoming voting scheduled for the state assembly elections of Gujarat. The first phase of the same will be conducted on December 1st, 2022, a couple of days from now. We have with us senior political analyst, Mr. Mahendra Jain, who should be joining us presently. Welcome and good evening, Mr. Jain. It's nice to have you on News Truth. Hello, how are you? Fine. So, Thanks. We are meeting again. yes, and we are on the cusp of another state assembly elections that are scheduled in Gujarat. So, Yeah. if I may start off with a slightly different narrative today, before we come to the Gujarat elections. Today, we had a video going viral on social media of the Minister of External Affairs, Mr. Jai Shankar, who has made a very poignant point on Indian politics. What he has effectively said is that the BJP is fighting each and every election uh, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Now, he made this point to emphasize that even though Mr. Modi has assumed charge as the Prime Minister of the country, he takes each and every election in each and every state of India very, very seriously. And that is why he has been hitting the campaign trail in a very, very aggressive style, which seems to be lacking if you look at the Aam Aadmi Party or even the Congress Party, the head of which Mr. Rahul Gandhi is currently on a Bharat Jodo Yatra, which does not seem to be making much of an inroad into Gujarat. So, how do you react to Mr. Jai Shankar's statement about the manner in which Prime Minister Narendra Modi is campaigning in Gujarat? According to me, all top leadership campaigning and taking part in election is very good thing. Leaders should always lead from front. And besides Prime Minister, Home Minister, whatever it is, or Nadda ji, all of them are party workers. And we have slogan, party first, nation first, party second, and third is ourselves. So, according to that, I don't think anything wrong in we have a system of fighting election, even corporation election. We take full force, and nothing wrong in that. It creates a big encouragement among the workers also, and there is a check. And by this thing, even Prime Minister comes to local last common man also. Okay, what he is feeling, how my things are going to at the ground. There is nothing wrong. On the contrary, it is good. तो प्राइम मिनिस्टर को भी पता चलना चाहिए कि हमने जो हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम किए हैं, जो योजना लगाई है कि अंतिम लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उनका रिएक्शन क्या है. Your point is well taken, Mr. Jain. At the same time, is there a sense in the BJP that the Gujarat elections, now that it is apparently a three-cornered fight between the BJP, Congress, and the AAP, and it is because of this that the whole political top brass of the BJP has hit the campaign trail? BJP always fights with full force, and best of is what you call political warfare. इसमें कोई ये नहीं है. Even in Telangana also, even in by-elections, we did the same. Our top leadership went. Amit Shah went there. Nadda ji was there in by-elections. Forget corporation election. Corporation election also we campaign like this only. This is our system. कि भाई जब करना है तो फुल फोर्स में करना है.
और टॉप लीडरशिप और स्मॉल लीडरशिप, बीजेपी इज पार्टी ऑफ वर्कर्स। तो हर प्रधानमंत्री भी एक वर्कर है, होम मिनिस्टर भी एक वर्कर है, और उसके हिसाब से लोगों के तक जाना, और उसमें क्या आम कार्यकर्ता पे नजर रहना, आम कार्यकर्ताओं को एनकरेज करना, उनको भी दे ऑल्सो गिव 100% इन द थिंग, एंड बाय दिस थिंग दे ऑल्सो कम टू द कंक्लूजन दैट भाई हमारे जो योजना है वो ग्राउंड तक गई है कि नहीं गई है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक बात जरूर हो रही है कि छोटे लीडरशिप अमित शाह और मोदी पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई अगर अमित शाह और मोदी आएंगे तो हमारा जो होगा। और एक मोदी आज नेशन ही नहीं, इंटरनेशनल में भी हीरो है। जहां भी वो जाते हैं फॉरेन विजिट्स में वगैरह, वहां भी इंडियन लोग दे वेलकम हिम लाइक एनीथिंग। सो व्हाई शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ आवर लीडर एंड हु I इज हीरो ऑफ द country. I After agree all, we with you. want to elect, we want to win the elections, and once we win the election, then only we'll be able to implement our yojnas, planning, or rather ideas. I So agree with I you, don't Mr. think Jain. anything wrong. However, what about the Gujarat level leadership of the BJP? Do we see the sitting CM Bhupen Patel actually helming affairs in terms of the election campaigning, or is it that today in India, most states, especially those ruled by BJP governments, are very dependent on Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and central leaders to ensure that they're able to retain the state assembly elections, including Nothing. Maharashtra, that One, is soon going to see one local minute, one civic minute. elections. In every election, every state, we are Modi is campaigning like campaigning in Gujarat. हाँ, ये बात जरूर है कि गुजरात इज होम स्टेट फॉर मोदी जी एंड अमित शाह ऑल्सो. सो दे हैव स्पेशल अफेक्शन, एंड this is an opportunity for them to meet their own old friends or voters or party sympathizers or what you call friends of BJP also, and it creates a good rapport. पर एक बात जरूर है कि मोदी का ऑरा और मोदी के काम इतने बड़े हैं कि उस लेवल तक कोई भी स्टेट लीडर पहुंचने में बहुत समय लगेगा. हम पूरे हिंदुस्तान के कई स्टेट में बहुत सी गवर्नमेंट्स है, बहुत सी कांग्रेस की गवर्नमेंट है या ऐसी गवर्नमेंट है, एक दो तीन जहां अपने खुद के लीडर एक्सेल हो गए हैं. जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, आसाम में हुआ, कुछ हद तक शिवराज, अपना शिवराज जी है अपने Madhya व्हाट यू Pradesh. कॉल इट, मध्य प्रदेश में. तो ये एक धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, होगा भी. और ऐसा नहीं कि वो डेवलप होने के बावजूद भी वो हमेशा एक डिमांड रहती है लोगों की, कार्यकर्ताओं की, नहीं मोदी साहब आने चाहिए, अमित शाह आने चाहिए. तो ये उनका भी डिमांड को हमको वी हैव टू लुक, मतलब सॉरी ना, बीजेपी हैज टू लुक इनटू इट. And BJP is doing very well by organizing all types of gearing up the whole machinery, and give their 100% to the any election, whether it is a corporation, panchayat or a parliament. इक्वली वो लोग करते हैं. और दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आप लीडर है तो पार्टी के वर्कर भी है. Point और taken कैंपेन again, करने में Mr. Jain. So now coming to the prospects in the state assembly polls of Gujarat, in the 2017 edition, the BJP, I would say, which was well in command, saw its fortunes dipping. Of course, there was the agitation from the Patidars, the Patel community at that time, and the yeah, BJP ended up with 99 elected MLAs. So, 1 minute. Yeah, yeah. I So understood my, the my point. point is, मेरा what is your assessment this time round? I remember speaking to you before the 2017 election, and you said that BJP will retain power in Gujarat, although their number of seats may come down below 100 MLAs. And you were so providentially correct, because they stopped at 99. So how do you see the prospects this time around, and why? लेट अस स्टार्ट के भाई 2017 में देयर वेर 3 मेजर issues which were very major issues. Gujarat is not a very big state, it's a medium or small state.
और बहुत बड़े इशू थे। बेसिकली ये कम्युनिटी, जो बिजनेस कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, ऐसा है गुजरात है। लास्ट टाइम जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू था, नोटबंदी एक इशू था, और उसके बाद में भी पाटीदार समाज जो काफी ऑलमोस्ट 23% वोट बैंक है, वो भी काफी हद से उनको मन में ऐसा हो गया था कि हमको चाहिए उतना शेयर Reservation. नहीं मिल रहा है। तो Reservations. They were उसके demanding बाद reservations. हाँ, और ज्यादा भी हुआ, फिर वो बहुत से पाटीदार नेता, छुटभैया नेता भी खड़े हो गए और पाटीदार ने एक ऐसा माहौल बना दिया। लेकिन कंपेयर टू दैट इन 22 आई डोंट थिंक एनी मेजर इशू। अब वो डेवलपमेंट तो मतलब ऐसा हुआ है कि गुजरात मॉडल पूरे इंडिया में बात कर रहे हैं लोग, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट भी बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट का इंडस्ट्री वहां जा रही है। मतलब कितने प्रोएक्टिव है गुजरात में इंडस्ट्री को लाने के लिए और वहाँ काम करने के लिए। आप अगर गुजरात जाएंगे तो देखेंगे कि वर्ल्ड की ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है जिसका वहाँ कुछ ना कुछ यूनिट है या नहीं है। ये सब कैसे संभव है? ये तो होना, कहना मतलब ये है कि लोगों को प्रोएक्टिव हो। अच्छा, इस बार भी दूसरा पटेल का इशू कैसे हुआ कि जो बहुत बड़ा एजिटेशन था, उसका जो लीडर बन गए थे मिस्टर पटेल, Hardik Patel. वो, हाँ Mr. हाँ Hardik हार्दिक, Patel. वो, हाँ, तो उन्होंने बीजेपी में एंट्री ले ली, बीजेपी की सीट पे लड़ रहे हैं। दूसरे एक ठाकुर थे, वो भी लड़ रहे हैं। उनको तो गांधी नगर का सीट दिया, जो बहुत ही अच्छी सीट है। अमित शाह जहाँ खासदार है, वो वहां से एमएलए का सीट दिया गया। ठीक है, रिजेंटमेंट तो हर लेवल पे हर पार्टी में रहता है, ऐसा कुछ नहीं, हर आदमी का ज्यादा। और पार्टी ने ओवरहॉलिंग भी किया है। जहां लग रहा था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, काफी 38 एमएलए को रिप्लेस किया गया। टोटल 43 पाटीदार्स को हमने टिकट दी है, मतलब सॉरी, बीजेपी ने टिकट दी है। तो इस प्रकार से जो ये काम हुआ है, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा मेजर इशू बीजेपी के पास है। नहीं, खाली एंटी इनकम्बेंसी या फिर 27 ईयर से लगातार है सत्ता में, वही शायद एक छोटा मोटा बात हो सकता है। और उसके लिए भी, उसमें फ्रेशनेस लाने के लिए हमने, मतलब बीजेपी ने काफी चेंजेस कर दिए। मतलब एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पे उनको टैकल किया गया है, काम भी अच्छे हुए। मोदी और शाह ने पर्सनली रोड शो करके लोगों को अपने आप में मिलाने का, मतलब डायरेक्ट मिलने का भी एक मौका ढूंढ के उनको एक फ्रेशनेस लाया उनके पूरे इलेक्शन में, जो दूसरी पार्टियां लेक कर रही है। So you're very मेरा right, अंदाज है Mr. कि Jain. मेरा Mr. अंदाज है कि इस बार कम से कम 20 to 25% सीट्स बढ़ने वाली है, और मार्जिन भी वोट्स का बढ़ने वाला है। अपोजिशन के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि Your जिसके ऊपर मतलब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। your point is taken. What you are insisting is there is no anti-incumbency. Besides, you're also saying that none of the major obstacles that were there in the path in the 2017 assembly elections of या demonetization or the reservations issue by the Patels वन or मोर इशू वाज देयर कि भाई बीजेपी हैज ऑलवेज बीन सक्सेसफुल, they have done, they have changed the local MLAs, anti incumbencies tackled on the local level also। कि ऐसा नहीं है कि सब काम ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको चेंजेस भी किया गया है। कई so बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जिन्होंने 5-5 बार एमएलए उनको भी चेंज किया, लेकिन इसके सामने कोई सीरियस ऐसा कांग्रेस के पास 77 सीट्स थी, उसके पास पूरा पूरा मौका था कि दे कुड हैव कम टू पावर एंड दे फ्रॉम डे वन दे शुड हैव स्टार्टेड एंड दे कुड हैव गिवन अ गुड फाइट टू बीजेपी, रादर दे कुड हैव कम बैक टू। जो गुजरात इज नोन फॉर कांग्रेस सिंस बिगिनिंग, कांग्रेस स्टेट, और उनके बाद उन्होंने बहुत किया। और एक बेल्ट जरूर था बीजेपी का कमजोर, मैंने देखा सौराष्ट्र में, और उसमें आदिवासी क्षेत्र में डांग जिला है या ऐसे 2-3 जिले हैं, उसमें भी जो द्रौपदी मुर्मू को जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका एक और महिला को बनाए। और देखा मैंने, और जब मैंने ऑब्जर्व किया नीचे से, मैं भी डांग जिले में गया था कैंपेन में इस बार, और मैंने देखा कि महिला शक्तिकरण का जो हुआ सबसे ज्यादा और सबसे
अच्छे महिला कैंडिडेट्स को इस बार मौका दिया गया है बीजेपी ने, वो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती है। 77 सीट होने के बाद जो सत्ता के करीब है, उसने जोरदार फाइट देना चाहिए था। तो दे लॉस्ट द प्लॉट। एंड आम आदमी पार्टी के पास तो वही घिसा पिटा सबको, ना उनके पत्ते ओपन हो गए कि हम लोग फ्री 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 की बात करने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई ऐसा अट्रैक्टिव मुद्दा नहीं है। चाहे तो लड़ सकते थे, लेकिन और उनके लीडर भी कैसे हैं, वो इटालिया, वो ऐसे, दूसरा एक और गढ़वी, जो गढ़वी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो खुद हार जाएगा वहां। और ऐसे ऐसे लोगों को लेके, अब जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे लोगों को आप लीडर बनाओगे जो बहुत ही मतलब नीचे के स्तर से काम करते हैं और उनका कोई समाज में रिस्पेक्ट भी नहीं है, इसका ऐसे लोगों को वोट कौन देगा, क्यों देगा? I take your ठीक है। point there. So, in effect, Mr. Jain, you have predicted that from 99 MLAs in 2017, the BJP is going to increase the tally by another 20 to 25 seats. So, you are predicting Yeah, 125 seats. 125 to 130 seat India. I see that they can definitely. Okay. At the same time, since you are very convinced and about the fact that there is no real political opposition to the BJP in Gujarat to continue to retain its power base in the state. So, in other words, you're also at the same time admitting that there is, if at all, some kind of a problem that may arise, it can be from within the BJP. And as we saw in the first phase of the elections, of the 38 sitting MLAs who were replaced by the BJP, 15 of them have chosen to contest as independents. So, how do you see that factor of those sitting BJP MLAs who are contesting as independents impacting the polls of the first phase on December 1st? See, in any election, for every party, there is a resentment, there is a independent or what do you call it, was very bitter fight for seats. तो वो तो होना है, वैसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पार्टी लोग कमल को और मोदी को वोट देते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति का मुश्किल है। एक आध दो अपवाद कहीं भी हो सकता है, ये कांग्रेस में भी होता है और दूसरी पार्टी में भी होता है। लोग जब वोट देने को जाते हैं तो इंडिविजुअल को वोट नहीं देते। कॉर्पोरेशन वगैरह जो छोटे इलेक्शन है, वहाँ मतलब ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी का कोई थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी बड़े इलेक्शंस में जहाँ विधानसभा है, लोकसभा है, इट इज ऑलवेज पार्टी काउंट्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी काउंट्स। May I, however, correct you here, Mr. Jain? If you remember very recently in Maharashtra, we witnessed one by-election to the Andheri East Vidhan Sabha seat, which was necessitated by the demise of the sitting Shiv Sena MLA Ramesh Latke, and his wife was fielded, Rutuja Latke. And it's another thing that the BJP and all other political parties chose to withdraw or not contest the particular by-election. However, it is also true that although Mrs. Rutuja Latke won the by-election, there were around 12,000 Nota votes that were registered, and they are believed to have been on behalf of the candidate who would have been contesting from the BJP ticket, who was withdrawn at the last moment. Mr. Patel, he was the officially announced candidate of BJP, but we saw that 12,000 Nota votes. So those were obviously his supporters who felt that he should have been in the fray, and therefore they chose to vote for Nota, none of the above candidates. So similarly in Gujarat, with these 15 sitting MLAs contesting as independents, will they not eat into the BJP votes, and will this not help the Congress or the AAP for that matter? It won't, because not much. I don't think any being a worker or rather observer at the very lowest level, I know कि भाई पब्लिक जब वोट करती है ना,
So they don't also want to waste their vote. Otherwise, which is बहुत ज्यादा सीरियस कोई इशू हो जाए, लोकल इशू, कि भाई यहाँ पानी नहीं आया, ब्रिज नहीं है, तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे। इसके सिवा कोई भी पब्लिक जनरली अपना वोट वेस्ट करना नहीं चाहता है। अब बहुत ही रेयर कंडीशन में है ये जो अंधेरी का जो इशू था, कि उसमें बीजेपी की ओर से बहुत ही फ्लिप फ्लॉप हुआ, और जो डिसीजन भी हुए वो बहुत ही आई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी डिडंट फाइट। और ऐसा कोई था नहीं, जब मुंडे ऑफ हो गए थे तो वहां भी सब लोगों ने लड़ा था, वहां तो किसी ने वॉक ओवर दिया नहीं। यही हाल वहां भी था, महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में या उधर पंढरपुर में, वहां भी किसी ने वॉक ओवर नहीं दिया। ये मुझे कोई समझ में नहीं आया बीजेपी ने ऐसा करके। पहली बात तो वो सेना की सीट थी, तो उन्होंने शिंदे के ऊपर, शिंदे को बोला कि भाई आप लड़ेंगे, शायद ऐसा हुआ होगा, और शिंदे ने मना कर दिया होगा लड़ने से, शिंदे फैक्शन ने। तो Okay. आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई, और जो भी वोट मिले लटके मैडम को, कि जो भी लटके हैं उनका, तो उसमें भी वोट खाली सेना के नहीं है, वो तो पूरे एमबीए के वोट है। बिल्कुल। उसमें काफी लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, फिर वहां से दूसरे लोग भी लड़े थे, तो बाकी के लोगों के भी वोट है ना भाई। शिवसेना कैनॉट क्लेम दैट उनका ही वोट है। और वैसे भी उद्धव जी ने तो ऐलान कर दिया था कि अगर लड़की को नहीं देंगे तो हम उनको दे देंगे वोट, महाडेश्वर को। तो उनका भी कोई बहुत बड़ा, और मुझे नहीं दिखा कि कोई बीजेपी मतलब शिवसेना के बड़े लोगों ने बहुत बड़ा वहाँ कर दिया कि एक चांस मिल गया, जब कोई सामने नहीं लड़ रहा है तो हम एक बहुत बड़ा मार्जिन लेके जीते, तो ताकि एक ये बात हो जाए कि ये हो। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कोई स्पेशल बात। हाँ जरूर है कि उसमें जो अंधेरी के जो उसमें था कि माइनॉरिटी वोट्स, और जो एमवीए के जो अलग दूसरे जो घटक है कांग्रेस के हैं और एनसीपी। समाजवादी पार्टी, उनके वोट्स बहुत बड़ी मात्रा में सेना को मिले, ऐसा नहीं, मेरा मानना है। लेकिन गुजरात में जो ये what you are talking is different, because generally Gujarat is a people who take हाँ, but one thing I definitely feel कि भाई there will be voting will not be very heavy, 70% और अबो, और एक्सेप्शनल वोटिंग नंबर्स नहीं आने आएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि बीजेपी जीतने वाली है, वोटर्स को भी पता है। कोई उनको परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं चाहिए कि वो मतलब बहुत ही बड़े मन से जाके बोला नहीं बस नोटा अपना बटन दबाना ही और इसको ही जिताना है, वैसा कुछ लोगों को। मोटिवेशन नहीं है। हाँ, सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो लोग जरूर मतलब आउट ऑफ द वे जाकर ज्यादा वोटिंग होती है। इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि ऑन एन एवरेज 60% से ज्यादा वोटिंग होगी। अगर So, होती है तो बीजेपी बड़े मार्जिन से मोर देन हर एक सीट 50% के ऊपर से जीतेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। okay. So, in other words, this is exactly, or not exactly, but quite similar to the Andheri by-election. You know, where we saw there was merely a 31.8% voting that was witnessed. And what was surprising was that in that 31.8%, Mrs. Rutuja Latke was able to secure 57,000 votes, you know, which was higher than what her husband had secured back in 2019. Husband got 80 votes, man. Sorry? Her husband got 80,000 votes. Okay. 45,000 तो पटेल था, इंडिपेंडेंट खड़ा तो उसको ही मिले थे। All right. So, fine. I stand corrected on that. But having said that, now when you are looking at the second phase of polls, I mean, now you have 15 BJP rebels who are contesting as independents out of the 38 sitting MLAs who were replaced by the BJP High Command. So, in the second phase of the remainder of those 38, what is the expectation? They are also obviously going to wait and watch how the first phase goes. ऑलमोस्ट 15 कुछ ज्यादा 15 एमएलए 15 सीट्स पे कोई रिबेल थोड़ा था, Right. 7 सेटल कर दिया गया, लास्ट Okay. 8 बचे। और ऐसा गुजरात का ऐसा है कि वहाँ कोई नोटा बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, Right. और नॉर्मल जो होता है वो होता ही है। Right. लेकिन बहुत ऐसा भी जो अंधेरी ईस्ट में हुआ वैसा कुछ आई डोंट थिंक इट विल बी। I don't expect much in Nota, but definitely there will be fight. People will be happy to vote anybody they want.
But preference is always Modi has a charismatic leader and he is son of the soil. तो उसके लिए तो अट्रैक्शन लोगों का रहेगा ही वो तो एंड वो अट्रैक्शन को भी मोदी ने रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड व्हाट ही इज डूइंग एज कैंपेनिंग ऑन रोड्स इज वेरी वेरी मच एडोरेबल करना भी Fine. चाहिए. I get that point. But at the same time, the BJP is always known as a very disciplined party. You know, PM Narendra Modi runs a very tight ship. And Mr. Amit Shah was very emphatic about this when he had recently visited Gujarat. And yet we saw these rebels, deciding to contest as independent candidates, which seem to, contradict the, Yeah, normal right. functioning of the BJP. How do सही you बात है. respond to that? BJP is a disciplined party. Generally, party you can recall ke bhai before elections also where all total ministry was changed suddenly, and none of them did any talk anything wrong. लेकिन एक बात जरूर है कि रिबेलियन होते जा रहे लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है. मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ इसको कि मोदी की पॉपुलैरिटी है और टिकट मिलना आने श्योरली ये जगह मतलब ये सीट विन होने का उनके चांसेस है. तो इसलिए हर हर आदमी को ऐसा लग रहा है कि मुझे टिकट मिल गई तो मैं जीत जाऊंगा. यही हाल. लेकिन आपने एक चीज छोड़ दिया है. गुजरात के अलावा भी हिमाचल में भी चुनाव है और हिमाचल में दो गुटों का बड़ा भारी टसल चल रहा है कि विद इन बीजेपी विच इज नॉट गुड फॉर द पार्टी. इसलिए वहां मतलब कोई भी नहीं लड़ने के बावजूद भी बीजेपी स्ट्रगल कर रही है और वो पार्टी को मुझे जो स्टालवर्ड्स हो जाते हैं जो बड़े नेता बन जाते हैं तो आपस में फाइट करना मेरा गुट जीतेगा मेरा गुट को टिकट मिलनी चाहिए. वहाँ अनुराग ठाकुर है उनके पिताजी का एक गुट है. सामने ठाकुर है जो अभी सीएम थे और जेपी नड्डा. उसमें मतलब इंटरनली काफी टसल मुझे दिख रहा है और इट मे इम्पैक्ट द विनिंग ऑफ बीजेपी Prospects of इन BJP फर्स्ट. in नॉट Himachal ओनली Pradesh. हाँ मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा. तो और जिसमें सामने कोई अपोजिशन है ही नहीं. ये लोग आपस में खुद ही बीजेपी खुद का अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रही है. So there you are. We will come to Himachal तो Pradesh वहां on another episode, because right now we को we will पर्सनली be बात करनी पड़ेगी. we एक will परमार be करने हिमाचल में तो मोदी जी को पर्सनली बात करनी पड़ेगी. उसको तुम यार वो कर दो. और उसने ऑन एयर बोल दिया मोदी जी को कि मेरे को नड्डा जी ने काफी परेशान किया इंसल्ट किया गया 5 साल में. ठीक है वो सही हो सकता है नहीं हो सकता बात की बात है. लेकिन आज पहली बार इतने सालों में कोई ऐसी बात हुई कि भाई. पर एक बात जरूर है कि भाई देखो एवरीबॉडी कैन नॉट गेट टिकट और वो और तुम्हारा टिकट 100% विन होने का चांसेस है. बीजेपी टिकट इज ए वेरी प्रेशियस टिकट के भाई तुमको टिकट मिला तुम्हारा 70% चांस तो टिकट के ऊपर ही हो जाता है जीतने का. fine. 30% ही Then the खाली. point is, among these 15 who are contesting from rebel BJP MLAs, how many have been आउट ऑफ suspended? You said 7 have been suspended. 7 लोगों को समझा लिया गया है. Okay, they have तो reconciled and अब they're not contesting, is it? फ्रेम में खाली 8 लोग ही हैं शायद. Okay, so you have stemmed the rebellion to a large extent, is what you're saying. Now, yeah. so what is the final thrust in the second phase, before the second phase of elections? The 1st of December we'll see the first phase. अभी तक महाराष्ट्र में हो रहा है. साउथ गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और 69 सीट्स है. I think out of 69, BJP will definitely secure 42 to 45 सीट्स. और सौराष्ट्र में जो लास्ट टाइम बहुत बड़ा जो फटका लगा था या जो लॉस हुआ था तो सौराष्ट्र में ही हुआ था. लेकिन सौराष्ट्र में इस बार काफी इम्प्रूव किया है रिपेयर कर दिया है सिचुएशन को. एंड आई थिंक रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली बेटर फॉर बीजेपी. दे हैव लर्न फ्रॉम लास्ट देयर मिस्टेक्स. एंड ये तो रिबेलियन का वगैरह वो तो इट्स ए वेरी कॉमन. दो इस टाइम ज्यादा है क्योंकि प्रोस्पेक्ट सबके जीतने के ज्यादा होते हैं तो हर एक को लगता है कि मुझे सीट मिलनी चाहिए. और एक बात देखा कि महिलाएं एक बहुत बड़े साइलेंट वोटर है. हिंदुत्व या फिर आप बोलो नेशनलिज्म एक इतना बड़ा इशू है कि दूसरी दोनों पार्टियां जो सामने खड़ी है उसको टच भी नहीं करना चाहती है.
एक खुला मैदान छोड़ दिया बीजेपी के लिए कि भाई आप ही खेलो इसमें, और हम तो भाई हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। हम तो अब देखो कि आदमी पैर पे कैसे, कुल्हाड़ी पे पैर कैसे मारता है कांग्रेस का, देखो कि Okay, Mr. Jain, it was really nice talking to you. Unfortunately, we have only limited time, and I want to come back to you on the same subject of Himachal and even the second phase of Gujarat in the subsequent episodes. Thank you so much for being on News Truth, and I will look my forward pleasure. to talking to you again. You also spoke and asked very constructive and very down to earth questions, and I was very happy to reply this whatever knowledge I have got and experience I have. And it's very good talking to you always. Thank you And so much. thanks. Have a super evening then. Bye. Bye. Thank you.